So students, in previous lecture we discussed about chemical coordination in plants, and today we discuss about plant movements, how plant movement helps in the control and coordination in plants. Plant movement has two types. First one is growth independent movement, second one is growth dependent movement. Firstly, I tell you about growth independent movement. Plants do not have any type of special tissue like nervous tissue to carry the stimulus. Stimulus means any agent in the environment by which plant part show movement, that is known as stimulus, and response of plant part is known as reaction. स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एजेंट, कोई भी फैक्टर या कुछ भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आए जिसके कारण से प्लांट पार्ट मूवमेंट शो करें, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। और जो रिएक्शन प्लांट का होता है उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स। क्लियर? और प्लांट मूवमेंट शो करता है, वो दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। पहले हम इंडिपेंडेंट बताऊंगी मैं आपको। इंडिपेंडेंट मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द सेंसिटिव प्लांट दैट बिलोंग्स टू मिमोसा फैमिली, and that is also known as touch-me-not plant and chew-me plant. When we touch the chew-me plant, then this information is communicated cell to cell by electrochemical means, but unlike the animals, पर animals की तरह नहीं होता. So then the petiole of touch-me-not plant fall down and its leaves are shrink and drop down. तब जब हम उसे टच करते हैं उसकी पेटियोल फॉल डाउन हो जाती हैं, उसकी लीफ श्रिंक हो जाती हैं। इसका क्या रीज़न है? बिकॉज बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन से दैट टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से, वाटर का प्रेशर अमाउंट चेंज होने की वजह से उसकी लीफ की जो स्टॉक होती है, पेटियोल बोलते हैं, वो फॉल डाउन हो जाती है, उसकी लीफ फोल्ड हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, बिकॉज बाय द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा. इज इट क्लियर? एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज आल्सो नोन एज थिग्मोनास्टिक. थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इट गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू टच स्टिमुलस. टच स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्स देती है, उसको हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट. क्लियर? एंड वन इज मोर, फोटोनास्टिक मूवमेंट. फोटोनास्टिक मूवमेंट लाइक sunflower, its petals are open during the morning time and its petal become closed during the night time. That type of movement also known as growth independent movement and फोटोनास्टिक मूवमेंट. जो लाइट से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है उसे हम बोलेंगे फोटोनास्टिक मूवमेंट, और जो टच से रिस्पॉन्स दे रही है दैट इज नोन एज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट. क्लियर? एंड अगेन आई टेल यू अबाउट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. Non-directional movement. Second one is nastic movement. That show in a sensitive plant. That sensitive plant belongs to Mimosa family. That plant is known as touch-me-not plant. When we touch the touch-me-not plant and its petiole, उसकी इस तरह से लीफ होती हैं, वो ऊपर की ओर होती हैं, तो ये लीफ क्या हो जाती है? ऐसे फोल्ड डाउन हो जाती है. दीज पेटियोल आर फोल्ड डाउन बाय चेंजिंग द turgor pressure. Turgor pressure means
the changing the amount of water, and by opening and closing of stomata. It's clear beta. Next one I tell you about growth dependent movement. Growth dependent movement is known as directional movement, is known as tropic movement. So we discuss about tropic movement. Tropic movement. The movement of plant part in response to stimulus. किसी भी स्टिमुलस से प्लांट पार्ट की मूवमेंट हो जाए स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट आल्सो. इज इट क्लियर? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट. डायरेक्शनल movement of plant parts in response to stimulus. It is directional movement of plant parts in response to stimulus. That type of movement is known as tropic movement. Different type of tropic movement. First one is phototropic. And that is known as phototropism also. Phototropism. So we write also phototropism. Yeah, we also write phototropic movement. Same definition. It is the directional movement of plant parts in response to light stimulus. जो light stimulus हो, light stimulus की तरफ plant part response provide करे, that is known as phototropism. If the plant part bend towards the light, light की तरफ bend कर जाए towards the light, that is known as positive phototropism. Positive phototropism. If away from the light, light की से दूर हो जाए, away from the light, that is known as negative phototropism. And mainly stem show positive phototropism and root show negative phototropism. Stem show positive phototropism and root show negative phototropism. Clear? In this way, same geotropism in the gravity stimulus. If towards the gravity, positive geotropism. If away from gravity, from negative geotropism. So now again I explain phototropism. Towards the light, positive; away from light, negative phototropism. One thing more I tell you about one activity to explain the phototropism. We take the potted plant and we put near the window. विंडो के पास रखेंगे where the light is come, जहाँ से लाइट आ रही है. And one side of the potted plant we set the cupboard सेट कर देंगे to provide the shady area. हम एक potted plant लेंगे, हमने उसको विंडो के पास रखना है. एक साइड से हम उसको कपबोर्ड से सेट करेंगे, कपबोर्ड लगाएंगे और प्लांट की एक साइड से लाइट आ रही है और दूसरी साइड से शेडी एरिया है. एंड आफ्टर सम टाइम what we observe? We observe that the light bend towards the window and towards the light. Plant part bend towards the light and root moves away from light. So stem show positive phototropism and root show negative
phototropism. Again I tell you about when we take the one potted plant near the window, one side the light will come and one side we set the cupboard to provide the dark shady one side of plant. So after some time, after some days, what we observe? We observe that the stem moves towards the light and root bend towards away from light. So stem show positive phototropism and root show negative phototropism. Is it clear? Next one I tell you about geotropism. 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 Same definition, the movement of plant part, the directional movement of plant part in response to gravity stimulus. In response to gravity stimulus is known as geotropism. You know that the root grow towards the gravity. जो रूट्स हैं वो अर्थ की ओर जाती हैं, सो दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी. सो रूट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड यू नो अबाउट स्टेम मूव अबव द अर्थ. अर्थ के ऊपर की ओर होती है तो स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. इज इट क्लियर? इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, that is known as positive geotropism, like example roots. And next, if the plant part away from gravity, that is known as negative geotropism. Example is stem. So root show positive geotropism and stem show negative geotropism. Clear? Next one is chemotropism. Chemotropism, the movement of plant part, the directional movement of plant part in response to chemical stimulus. Chemicals means hormones. Chemicals stimulus is known as chemotropism. Towards the chemical, positive chemotropism. Away from chemicals, negative chemotropism. And one more example of chemotropism, formation of pollen tube. Formation of pollen tube towards ovule. Ovules. pollen grains होते हैं मेल जर्म सेल इन प्लांट्स. pollen grains स्टिग्मा पे एंटर करते हैं. इस तरह से आपने 8th में भी पढ़ा होगा बेटा. pollen grains होते हैं मेल जर्म सेल और ये क्या करते हैं, किसके अंदर एंटर करते हैं? एव्यूल के अंदर. ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एव्यूल बना होता है और यहाँ पर ये क्या बनाते हैं? pollen tube. For the entry into the ovule. pollen grain इस पार्ट स्टाइल के अंदर pollen tube की फॉर्मेशन करते हैं ताकि एव्यूल के अंदर एंटर कर सकें और फर्टिलाइजेशन कर सकें. और ये pollen grains एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण से pollen tube की फॉर्मेशन होती है. देन दे एंटर इनटू द एव्यूल. Clear? So one example of chemotropism, formation of pollen tube towards ovule. Next one, hydrotropism.
Hydrotropism, the directional movement of plant part, the directional movement of plant part towards water stimulus की तरह plant part की movement हो जाए, that is known as hydrotropism. So towards the water stimulus. Same, positive towards the water, and one is negative hydrotropism. Towards the water, positive towards the water, and away from water, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. जैसे एक एग्जाम्पल है, हम वी टेक द मॉइस्ट सी sawdust like this. What we observe, this is the moist sawdust in the sieve. And in this seeds are present. Seeds are present. छन्नी होती है ना, जैसे छन्नी, उसी तरह उसको हम बोलते हैं सीव. वो मॉइस्ट सीव है, उसके अंदर सीड्स हैं. एंड यू नो अबाउट रूट्स आर ग्रो लाइक दिस. Roots are grow like this. After that, what will happen? The water is present here. Lower side in the sieve, water is not present. So then root grow like this towards the water. So it show more hydrotropism other than the geotropism. हाइड्रोट्रोपिज्म ज़्यादा शो करता है एज कंपैरिजन टू जियोट्रोपिज्म. रूट्स नीचे की ओर आने लगती हैं, फिर ये अपवर्ड जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉइस्ट. Is it clear? So the movement of plant part like roots towards water, towards moisture, towards water, that is known as hydrotropism. Clear? Next one is thigmotropism. Thigmotropism. Thigmotropism, the directional movement of plant part in response to touch. In response to touch भी ठीक है. In response to touch या spot stimulus. Touch या spot stimulus. That is known as thigmotropism. That thigmotropism is seen in tendrils. Tendrils के अंदर हम thigmotropism को ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे लाइक बेल, टेंड्रिल क्या करती है, that move towards the spot, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती है और उसके चारों ओर इंसर्कल करती है, इस तरह से ग्रोथ करती है. और जो टेंड्रिल के अलावा प्लांट के पार्ट्स होते हैं, दे रैपिडली ग्रो एज कंपैरिजन टू टेंड्रिल. एंड बिकॉज टेंड्रिल इंसर्कल द स्पॉट, सो द टेंड्रिल शो द मूवमेंट in response to spot and it encircle around the spot. So they show not rapid growth as comparison to other plant parts, and that type of is known as thigmotropism. Thanks a lot.